हमारे पीछे हिस्टोरिक पंजाबी मार्केट है, 2.5 ब्लॉक का एरिया, जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए एक ज़माने में बहुत ज़रूरी था, बहुत अहम था। पूरी कम्युनिटी यहाँ इकट्ठी होती थी एक दूसरे से मिलने के लिए, बात करने के लिए। व्हाट्स न्यू इन वैंकूवर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से लेकर अगले 4 हफ्तों तक आपके लिए हम 4 आखिरी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मैंने सोचा इन 40 सालों को आपके लिए हल्का हल्का सा डिवाइड करके पेश करें। पहला नगर कीर्तन जो हमने रिकॉर्ड किया था वो 1983 में था, जबकि अगस्त की 13 तारीख को स्कीना गुरुद्वारा खुल रहा था। उस वक्त की पूरी जो फिल्मिंग है हमने करी, और तब बैरेट साहब थे और उनके साथ माइक हारकोट को आप देखेंगे, जो कि वैंकूवर के मेयर थे। अपने बेटे के साथ वो लेके आ रहे हैं और ये पूरी ओपनिंग सेरेमनी, पहला नगर कीर्तन हमने रिकॉर्ड की। उसके बाद 85 से लेके 2017 तक हर साल वैंकूवर का और उसके बाद सरी का नगर कीर्तन हमने कवर किया। ये कम्युनिटी के लिए किया क्योंकि हम इस कम्युनिटी का एक हिस्सा हैं। इसके साथ साथ आइए आपको ले चलते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने इस कम्युनिटी के साथ काम किया, और हमारी अपनी कम्युनिटी हिस्से ही नहीं थे, लेकिन बाहर की कम्युनिटी के लोग भी थे जिन्होंने मदद करी। उनमें हमारे कैमरा क्रू, चाहे वो सुधीर हो, स्कॉट मैकडोनल्ड हो, डनी डॉसमैन हो या क्रिस लिंडग्रेन हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद की कि हम प्रोग्राम आप तक पहुंचा सकें। For me, I guess my big moment working with IT production was the discovery of that culture. Little Frenchman coming from Montreal, the Indian community to me is so far away. Like even English Canadian were different than us. So when I discovered this community, the culture and everything, I was just like almost in shock. I was so impressed. Doing these Bollywood movies and the size of these productions, the people involved, and the music, the food, the saris, the dupatta, the colorful, everything was so wow to me. It was a discovery, really. I was really impressed. And really opened my mind too, because there's a different way of thinking, a different way of seeing things, so it made me a better person somehow. शुभ कर मनते कब हो न टरो, देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मनते कब हो न टरो, शुभ कर मनते कब हो न टरो, न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, देह शिवा बर मोहे, देह शिवा बर मोहे, अर सिखूं अपने ही मन को एहलाल छाऊं गुण तो उचरूं, एहलाल छाऊं गुण तो उचरूं, जब आपकी औध निधान बने अधीरण में तब झूझ मरो, अधीरण में तब झूझ मरो, अधीरण में तब झूझ मरो, बोले सोनेहा। थोड़ा बेनती करेंगे सरदार सुजान सिंह नाल जो के आप संतां दे एक दो मिनट वास्ते दर्शन करेंगे, दोनों तो बाद सोन सिंह जी चंद्र, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Its heart and takes its community out into the streets where the rest of us can enjoy. It's an important day for all of us. It's a time when we in our multicultural society can reach out to each other and share some of our culture and share some of our values with each other. So congratulations to all the organizers, and again, best wishes for the day. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Good morning. What a beautiful day.
What a beautiful place to be in British Columbia. I'm so proud to be your representative in Vancouver Fraser View. I hope to continue to be, and to celebrate today Vaisakhi. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The first time I was invited into your Gurdwara was 17 years ago. I came as someone who was running for City Council. And I can say over the last 17 years, the Sikh community, not just of Vancouver, but of British Columbia, has continued to welcome me, has continued to teach me, and has continued to set an example of openness, of honesty, and of sharing. सारे सुनने वालों को विसाखी के दिन ते बहुत बहुत बधाई होवे आनंद माणो धुप माणो BC वधिया सूबा आ खुश रहो ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Oh, I would say the Vaisakhi Parade, definitely. Year after year of starting at the Ross Temple and walking on Marine Drive up, was it Main Street, and then back to 41st or 49th to Fraser and back down to the temple. That was a long, long day of production. We walked all the way with the parade. Yes, all day. We followed the whole event, and then of course there were like political people that were on stage doing some speeches, and other medias were there, and the thousands and thousands of people. It was just moving in a mass. It was like, I've never seen anything like it. Like even the Stanley Cup parade in Montreal when we won the cup, it wasn't that many people, you know. So that was impressive. It was a lot of work, but it was fascinating to see. Nagar Kirtan is now at the Punjabi market, the famous Punjabi market on Main and 49th. I'll tell you about, I've never seen so many people at the same time. And it was like I said before, it was like everybody was moving one direction. And at one time I was pushed over from somebody behind and ended up on the ground. And nobody saw me down there with the camera. And I couldn't get up because people were just walking right over me, and I tried to protect the camera. So I had to phone 911 to the police and said, I'm down here, can you please help me? And I tried to explain where I was on Main Street. And they said, we tried to find you. And they could hear in the background some politicians, what's her name, Clark? Mm-hmm. Yeah, she was at the podium. So they could have an idea where I was. I couldn't get up, and I was run over by baby strollers and everything. And finally, I found somebody that helped me to go up and continue up to 49th. And then they phoned back from the police and said, how are you? And I said, I'm up on my legs anyway. So that was the scariest moment ever. ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ 49th ਐਵਨਿਊ ਤੇ
नगर कीर्तन चलदा चलदा आपने आखिरी मंजिल ते पहुंच चुकिया है, बल्कि आखिरी मंजिल नहीं एक तरह नाल कहिए ते क्लाइमैक्स दे उत्ते पहुंच चुकिया जिथे हज़ारां दे तादाद दे विच लोग इस नगर कीर्तन दा इंतज़ार कर रहे हैं। चारे पासे तुसीं देख रहे हो मेले वाला माहौल, खान पीन दा समान, रंग बिरंगे कपड़े ते बड़ा जोश लोकां दे विच। उम्मीद है कि तुहानूं अज दी साडी कवरेज पसंद आई होएगी। जे तुसीं कोई जानकारी चाहो या कोई राय देना चाहो साडे इस प्रोग्राम दे बारे विच तां साडा ईमेल एड्रैस नोट कर लो ustat@rimjim.com. As the float carrying the Guru Granth Sahib Ji makes its way onto 49th Avenue, this brings us to the end of this week's episode of What's New in Vancouver. I showed you the video of the pioneers. Tell me something about that. When was that event? When did it take place? Where did it take place? Well, I think it was one of the initial events where people felt that something should be done to honor pioneer families. I believe it was 1989 at the Trade and Convention Center, the original one, and families were brought together. I remember some of them were people who I knew from my childhood because they were friends of my parents. Mr. Niranjan Mahal was there. It was the era of Dr. Pandya's days, so he was honored, and honored by the Social Credit Party at the time. I think they were quite involved. A lot of the MLAs like Stephen Rogers and Grace McCarthy, all of those people were there. Lots of old faces, old in the sense of these were people who came to British Columbia in the 20s, the 30s, 40s, and were among the people who built the foundation for which this province grew from. And I think it was put together maybe quickly, I don't know about that, but it was just a sampling of the people, because I do remember a lot of people were kind of like, oh, well, we didn't see so-and-so and we didn't see so-and-so, but that just spoke to what an impact the Punjabi community has had on British Columbia, because there were so many people who have helped to build it. Canada enjoys a reputation of being a friendly, compassionate nation, open to the peoples of the world. Good hit, Paul. Good hit. Vancouver is a popular point of entry for those arriving from the Indian subcontinent. Indians are members of one of the oldest civilizations on Earth and have always been adventurers, traveling throughout the world. There are over 90,000 people of Indian origin living in the Vancouver area. While the majority still arrive from the state of Punjab in India, others come from England, Fiji, Africa, and the Caribbean. The Indo-Canadian community has a history dating back to the turn of the century. Vancouver was host to part of that history that Canada would likely just as soon forget. If she is a real Japanese tramp, she should be in port this week with her picturesque passengers. The immigration officials are said to have purchased the available supply of handcuffs and have made other preparations for her arrival. Right-thinking people know that natives of Hindustan should not be allowed in this country, except for circus purposes. To admit Orientals in large numbers would mean in the end the extinction of the white peoples. And we have always in mind the necessity of keeping this a white man's country. Canada Place, Vancouver's Trade and Convention Centre, a symbol of a city which welcomes the world. Ironically, the Canadian Immigration Office stood almost on the same spot in 1914 when the Komagata sailed into Burrard Inlet. It had 376 Indian passengers on board. They were denied the right to land. The first Indians to come to Vancouver were well received. As members of the British Indian Army stationed in Hong Kong, they passed through Vancouver on their way to the coronation of King Edward VII in 1902.
and were given a hero's welcome. The Vancouver Daily Province noted, stalwart of physique and majestic of mien, the awe-inspiring men of India held the crowds. I also think that it was the catalyst for what came after that in terms of governments, provincial and federal governments recognizing the event of Komagata Maru, its history becoming a part of the curriculum in BC schools, more and more people. It got to the point where you said Komagata Maru, they didn't say, what? And they knew. They knew what the history was. It became part of BC's fabric, whether people thought it was positive or negative, but at least people became aware of it. And for me, personally, it was fascinating because I came home after a shoot one day. We had been shooting in what was now an artist studio in downtown East Side, and I was telling my mother about this. Oh, I did this. I stood in the balcony and I looked down to where the Shore Committee and people from the community had been meeting. And she just kept listening and looking at me, and I was like, what's wrong? And she says, you do know your grandpa was there at that meeting. And so that was really interesting for me because I never met him, and that, you know, he probably never thought that 75 years later his granddaughter would be, you know, standing on the balcony looking down, talking about something he was involved in. Dominion Hall is an art studio these days, but it was the site of several meetings which demonstrated the feelings surrounding the Komagata Maru incident. The Indian community held 2 meetings here. The first drew 500 people and raised $5,000 on the spot. This from a community whose members averaged $1 a day in earnings. This was also where 2,000 people listened to H.H. Stevens and others speak in violent opposition to the Komagata Maru and Asian immigration in general. At that meeting, Indians were turned away at the door. Hassam Rahim, a Shore Committee member, tried to speak from the balcony, but he was hauled away by police to the cheers of the crowd. एक और चीज़ जो मुझे ये लग रहा था कि हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो था बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को सपोर्ट करना। सिर्फ बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को सपोर्ट नहीं किया हमने, उनके साथ साथ यूनाइटेड वे और हंडिया बाबा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। और यहाँ पे अपनी कम्युनिटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया। हमने कहा हमें पैसों की ज़रूरत है, आपने कहा कितने दें आपको, और पूरी कम्युनिटी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि 1992 से लेके 1996 तक हमने ओवर $1 मिलियन इकट्ठा करके इन आप लोगों की तरफ से इन संस्थाओं को दिया है। उसकी कुछ झलकियाँ आपके लिए पेश करना चाहते हैं। शनिवार का दिन है और रात के 9 बज चुके हैं, और वही दिन जबकि आपको हमारी मदद करनी है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए। बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए हम आज पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और आपकी मदद की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है, और जब भी हमने आपको कहा है आपने हमेशा हमारी मदद की है, और आज भी आपकी मदद की ज़रूरत है। चाहे आप $10 दें, $50 दें, $100 दें, $1000 दें, लेकिन दें ज़रूर। हमारा टेलीफोन नंबर 2998642। देखिए वॉलंटियर्स आ रहे हैं आपके टेलीफोन कॉल्स लेने के लिए, और आपको भी हमारी मदद करनी होगी। हमारे प्रोग्राम आपके लिए बड़े ही खूबसूरत हैं, और बहुत ही प्यारे प्रोग्राम हमने आज शाम के लिए आपके लिए चुने हैं, और वॉलंटियर्स 100 से ऊपर वॉलंटियर्स हैं। और अब मैं आपकी मुलाकात अपने एक बहुत ही स्पेशल दोस्त से करवाना चाहती हूँ। हाय, हाउ आर यू? Okay. Rohini, you have a special message for BC Children's Hospital Telethon. Please call now. We're waiting for your call. तो लीजिए, प्लीज़ कॉल नाउ, वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल। 2998642 हमारा टेलीफोन नंबर है। आइए हम अंदर चलें और देखें अंदर क्या हो रहा है। बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की,
हमारी मेहनत को कारगर किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये जो मेरे साथ भाई साहब खड़े हैं, मुझे इनके साथ खड़े होकर बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए कि परम चट्टू हमारे स्टेशन के, हमारी कम्युनिटी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी कभी हमने को ख़ास मैसेज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करनी है तो परम हमेशा हमारी मदद करते हैं, और आज पूरी शाम यहाँ पे उन्होंने आप सबके लिए टेलीफोन कॉल्स लिए हैं, हमारे और भी बहुत से काम किए हैं। परम, आई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस इवनिंग। You're welcome, Shushma. It was my pleasure. Tell me something. This is your first time that you're taking part in a telethon. हाँ जी, ये पहली बार ही आ ਜਿਹੜਾ मैं इदा हिस्सा लिया इस telethon ਤੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? It's a lot of work. A lot of work. और जो लोग घर बैठ के आराम नाल सोचते हैं ने कि ਉੱਥੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ करते 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? Well, I can tell them that's not true. It's ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। No problem. I would just like to say to all my friends and relatives, especially the Gills, the Chattoos, and the Jagpals, to phone in and donate lots and lots of money. थैंक यू सो मच। परम चट्टू जो कि हमारे कम्युनिटी के एक बहुत ही जाने पहचाने कांस्टेबल हैं और हमारे इन प्रोग्रामों में हमेशा मदद करते रहते हैं। और अब आइए शबीला जी आपको कमल शर्मा के साथ बताएंगी कि रेडियो रिमझिम आपके लिए क्या कर रहा है। कमल शर्मा और शबीला। शुक्रिया सुषमा जी। मेरे साथ आप जैसे देख रहे हैं इस समय रिमझिम रेडियो के स्वर तरंग प्रोग्राम की शबीला जी साथ में है। और आपको ये बता दें कि जहाँ ये टेलीथॉन चल रहा है ना, उसके साथ ही साथ रिमझिम रेडियो के सौजन्य से एक रेडियोथॉन भी चल रहा है। शबीला जी, आप इसके बारे में बताइए जरा कुछ। पहले तो मैं आपसे नमस्कार करती हूँ और देखने सुनने वालों को भी शबीला सिंह का नमस्कार। जी हाँ, रेडियोथॉन के जरिए हमने $3,500 इकट्ठा किया। बहुत भले कमाल हो गया। जी हाँ, रेडियो सुनने वालों ने काफ़ी हमको मदद किया है और उनका सहयोग और उनकी शुभकामनाएं, और उन्हें हम धन्यवाद दे रहे हैं, दिल से धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है। देखा आपने, ना केवल लोअर मेनलैंड में लोग व्यस्त हैं इस समय फ़ोन करने के लिए, जो कि अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दें 2998642, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी इस ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में जो लोग रेडियो के सौजन्य से इस रेडियोथॉन को सुन रहे हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो प्रिंस जॉर्ज में हो, विक्टोरिया में हो, ननाइमा में हो या कहीं भी हो। और ये जिक्र है, ये बताता है कि किस प्रकार से लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कमल जी, आपसे बताऊं कि प्रिंस जॉर्ज से काफ़ी लोगों ने हमको फ़ोन किया है और वो चाहते हैं तो अभी भी फ़ोन कर सकते हैं हमें 2998863 पर। अगर उन्हें 2998642 ना मिले तो हमें 2998863 पर फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबीला जी। गुरदास मान दी दुआ सलाम कबूल फरमायो जी। आप इस वक्त टीवी पे ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं जो हांडिया बाबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल इलाहाबाद के अधूरे काम को पूरा करने के लिए ख़ास तौर पे पेश किया जा रहा है। इस नेक काम के लिए आपकी इमदाद की, आपके सहयोग की ख़ास ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हांडिया बाबा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए आज पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और मेरे साथ अब दलबीर गिल हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए आज हमने टेलीथॉन का आयोजन किया है और आपसे हमारी यही दरख्वास्त कि टेलीफोन करें। हमारा नंबर 2998642। सुषमा जी, ये प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने से पहले आप मुझे हांडिया बाबा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैं चाहती हूँ कि पहले प्रोग्राम किस तरह के लोग आज देखेंगे, उसके बारे में, उसके बाद हांडिया बाबा की बहुत अच्छी टेप है। हाँ, मैंने वो लेकर आए हैं। हमें आज ही पहुँची है टेप, हमने देखी भी नहीं है, लेकिन वो ज़रा आगे चलकर पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम क्या दिखाने जा रहे हैं। आपने हमारा कार्यक्रम देखा कानून, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। आज आपके लिए फ़िल्म नहीं पेश कर रहे हम, लेकिन आपके लिए कानून, म्यूज़िक बॉक्स, यादें, व्हाट्स न्यू इन वैंकूवर, बहुत कुछ और प्रोग्राम है आपके लिए। आज हम यूनाइटेड वे का टेलीथॉन रख रहे हैं। मेरे साथ कंडोला साहब हैं जिन्हें कि हमारी कम्युनिटी के सभी लोग जानते हैं। तो ये कंडोला साहब का प्रोग्राम में स्वागत करें। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी सुषमा जी, बहुत खुशी हुई ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਵॉलੰटियर ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ।
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵਾਂ ਦਸ਼ੌਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ 10ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 5ਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਟੀਨੇਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। We collected a lot of money and I would like to thank everybody who donated a whole bunch of money. So thank you everybody. Thanks. And you? Just want to thank everybody who donated today, and that's it. I want to thank everybody who took time to phone and call in a donation. Thank you. It was a good cause. हाँ, हम लोग बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने तकलीफ लेके हमारे को इतनी डोनेशन दी। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. This is a great cause that you all donated for, so thank you very much. Thank you. Thank you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। और आप सबको हमारी तरफ से गुड नाइट।